Hello, my dear friends. How are you all doing? I hope you all are prepared very well for examination, as well as learning all the basic concepts to regain your conceptual clarity in the topic function. Today, again, I am here with the questions, and indeed, it is a very important question to find the range of. This time, I got a questions in the form function. Basically, this function is of form quadratic by quadratic. So this time I'm going to use calculus approach or calculus method to find the range of the given function. So the basically here we're going to use the method of differentiation, and mainly its geometrical interpretation is going to play a vital role to find the range of the given function. तो चलो देखते हैं किस तरह से इस क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म का हम रेंज फाइंड कर सकते हैं. तो इससे पहले हम रेंज फाइंड कर रहे हैं, हम कुछ कैलकुलस की चीजों के बारे में बात कर ले. सबसे पहले हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन की. ओके कि हम डिफरेंशिएशन का यूज इस तरह के मेथड में कैसे करेंगे. तो हम बात करते हैं सबसे पहले डिफरेंशिएशन की. तो डिफरेंशिएशन का यूज हम कैसे करेंगे और जो डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है जिससे हम इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो नॉलेज हमारे पास डिफरेंशिएशन का है वो क्या है कि ये कुछ नहीं, रेट ऑफ चेंज फाइंड करने में हेल्प करता है, रेट ऑफ चेंज. उसके बाद दूसरा, ये बिल्कुल हमें ये बताता है कि अगर किसी कर्व में कोई टेंजेंट हम ड्रॉ करें किसी पॉइंट पे, जैसे हमने इस टेंजेंट ड्रॉ करा इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे इस टेंजेंट के स्लोप क्या है ये भी आसानी से हम डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, और यही ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है डिफरेंशिएशन का. सिंपल. तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व. ओके, these two things are going to help us to find the range. First of all, slope of the tangent, and we must understand how is slope moving along this curve. And the curve is given to us. If you consider this point, okay, if you're talking about this point here, the slope look like this, the tangent look like this, and slope can be this. And we know this tan theta gives us the slope as we studied in the chapter straight line class 11. So this tan theta gives us a slope. That is, again, if there is a point in which you have to find the tangent, then this is the tangent, and this tangent has its own slope. Again, this tangent move like this tangent move like this, here this like this, here this like this. Okay, and at the top, obviously, tangent is drawn at a single point, so this tangent become completely and parallel to the base. So in this moment, I can say the tangent reached at the top of the curve. This tops gives us what? Maximum value of the function or maximum value of the curve. Similarly, there could be a possibility that this tangent, this curve can be like this as well. Okay, so now when this curve is like this, we can draw a tangent on it. We can draw a tangent here like this. We can draw a tangent here like this. We can draw a tangent here like this, and we can draw a tangent here like this. And at the lowest point, this tangent surely become parallel to this x-axis or this line. So when this obviously when we move a stick along this curve, when reach at the top, we can easily assume that at the top point this tangent becomes parallel to the base, and we can easily understand that particular point where we have drawn the tangent at the top is the maximum value of the given function or given curve. Similarly, if you move along this left curve, when reach at the minimum point, okay, when we reach at the minimum point, we get a tangent like this. Obviously this tangent is parallel to the x-axis or this base. So basically when we reach the top, this maximum value or this minimum value gives an idea that the tangent becomes parallel to the, and slope of tangent is nothing but the tan theta, and here tan 0, because this line becomes parallel to the x-axis, so theta between them is 0, so tan 0 is there. Okay,
tan 0 gives us 0. So now this tan theta is nothing but dy by dx, okay, which will become 0 at the maximum value and at the minimum value. So when you find the differentiation of a given function and equate with 0, we get some values of x, which simply gives us the idea that yes, at this point of x we are getting maximum value, at this point of x we are getting minimum value. If you have know the value of x here, for which this function or this curve gives us minimum value, so this x will be considered as the value where the function gives us minimum value. As well, this function also considered as the value where this function gives us maximum value. The thing is that we have to understand here is, anyhow, if this difference is a 0, means tan theta is 0, means slope becomes parallel to the base. We can say we reach at the top, or we can reach at the lowest value of the given curve. Okay, are you getting my point? These things are very, this is what the meaning of geometrical interpretation, and we have to understand this as. Now come to the solution part of the given problem. What is the problem? We have to find what the range of the given function, and the function is as usual. Okay, I'm going to write the function once again. Y equals to x square minus x plus 1 and x square plus x plus 1. Okay, so again we find the differentiation of this function as we did in the case of this dy by dx. Okay, and we equate with the 0 and find the value of x. That particular value of x gives us idea that at particular point we are getting maximum or minimum value of this. Okay, now we start doing this. We are going to find what dy by dx of given function. We know this is uy free form, so we know the formula for it, that is the quotient rule. This is vc square, we are getting the v into differentiation of the numerator minus u into differentiation of denominator. This is the formula we're going to use. Okay, similarly here I'm going to do the same. We are going to get here the denominator is square, okay, like this. Okay, again you find uh, what we can do, differentiation of this function. Okay, differentiation of this function. What is this? This is our x square plus x plus 1. Okay, now this is what the v is. We kept v as usual. Now we have to talk about this numerator. The differential numerator is what? 2x minus 1. Again we place minus sign as per here, and after placing minus sign again we do the same. We leave this first function, that x square minus x plus 1 as usual, and differentiate the numerator function. That is, we'll get what? 2x plus 1. Okay, this is the differentiation we have started. Now we collect all the terms together such that we can simplify it and find this. Now write what? This is x square plus 1. This is 2x minus 1 minus 2x minus 1. Why? What I have done? I have taken this x square and plus 1. I have taken this x square plus 1 together. Okay, and here as well I have taken this x square plus 1 together. I have taken them common, and whatever is multiplied with this I wrote here. For this we are going to multiply this 2x minus 1. Again with this we are going to multiply this 2x plus 1. So this, there is minus in between, so plus this plus become minus. Okay, so now I have these things. Again we left with x and x here. What we do, simply we take plus x here, okay, as common thing. So let be 2x minus 1, 2x minus 1 here as well, minus is there. So what do we get? We get plus 2x plus 1, because this minus into minus, this minus into minus gives us plus, so it is plus. Okay, in numerator, in denominator again we have what? X square plus x plus 1 square. Okay, we got this value. Now this 2x cancel, this 1 and 1 cancel. What we left with? We left with nothing but the minus 2 x square plus 1 plus 4 x square. This becomes 2 plus 2 4 divided by x square plus 1
square. Okay, this is what we get from here. Okay, we got these are differentiations. Again, what we do simply from here, we can do one thing. We can easily understand how can we solve this problem from here onwards. Okay. Now, what we left with when we solve it, 4x square minus 2x square gives us 2x square, and we'll get 2 here. Okay, this is minus 2 into minus 2, and in denominator we'll get x square plus x plus 1's whole square. Okay, when we take 2 common, we left with what? X square minus 1 and x square plus 1 plus 1's whole square. Okay, here again what we get 2x plus 1 x minus 1 divided by x square plus x plus 1 whole. This is the final differentiation. Okay, I hope you understand this. This is the final differentiation you utilize here. Okay, now we're going to use the sign scheme for this value, this answer. Okay, as we know, this denominator always gives us a positive value, always positive. This gives us always positive. Okay, so in sign scheme, we are not going to utilize this, but we are going to use only numerator part. So this numerator, we have two values. One is 1 and one is minus 1. We'll get minus 1 from here, we'll get plus 1 from here. This come plus, minus and plus. Okay, so now what we will do, this is the sign scheme we have to utilize here. Okay, so what we do from here, we have to utilize this sign scheme and understand where our solution lies for this. तो अब इस साइन स्कीम का यूज करके हम समझेंगे, ये साइन स्कीम किसी एक्स की वैल्यू फाइंड करने का नहीं है, ये साइन स्कीम है डिफरेंशिएशन के लिए, कि डिफरेंशिएशन इस रीजन में पॉजिटिव होगा, इस रीजन में पॉजिटिव होगा, और डिफरेंशिएशन इस रीजन में नेगेटिव होगा। मतलब इस रीजन में स्लोप जो होगी टेंजेंट की वो पॉजिटिव होगी, इस रीजन में भी स्लोप पॉजिटिव होगी, और इस रीजन में स्लोप नेगेटिव होगी। मतलब आपके पास अगर कर्व ऐसा है, ठीक है, तो देखो इस रीजन में ये जो स्लोप है ये लेस देन 90 डिग्री एक्यूट एंगल है, तो tan थीटा इस एंगल के लिए पॉजिटिव होगा, मतलब हमारा स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज पॉजिटिव। अब धीरे जब आगे बढ़ोगे ऐसे ऐसे, यानी स्लोप ऐसे गया आपका, अगर आप यहाँ चले गए स्लोप बिल्कुल पैरेलल हो गया, उसके बाद स्लोप फिर नेगेटिव होने लगा, मतलब आपका ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा। ओके, अगर आपका स्लोप नेगेटिव है, देखो वी आर गेटिंग व्हाट ऑब्ट्यूज एंगल, फॉर ऑब्ट्यूज एंगल tan थीटा गिव्स अस नेगेटिव वैल्यू। तो जब ये नेगेटिव होने लगा, इसका मतलब आपका ग्राफ कुछ ऐसे आता है, एक समय ऐसा होगा पैरेलल होकर फिर पॉजिटिव होने लगा, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव होने लगा, मतलब आपका ग्राफ कुछ कर्व इस तरह से इनवर्ड हुआ होगा। तो ये चीज समझाता है हमें ये साइन स्कीम। ओके, तो नाउ चलिए तो हम इसको आगे की तरफ सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि कैसे करके हम डिफरेंशियल तय करेंगे रेंज। तो अब देखिए हमारी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इस माइनस इन्फिनिटी से आते आते 1 तक आ रही है, फिर 1 0 ऐसे करते करते ये वैल्यू फिर 1 की तरफ जा रही है, 1 से फिर प्लस इन्फिनिटी तक निकल जा रही है। तो चलिए हम हर एक x की वैल्यू पे y की क्या वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम y फिर से लिखते हैं, और हमारा y है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ओके, चलिए अब हम वैल्यू देखते हैं, इधर x इक्वल टू इन्फिनिटी में हमारी वैल्यू क्या होगी, x जब इक्वल्स टू 10 टू माइनस इन्फिनिटी है तो हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। फॉर दिस हम कुछ लिमिट्स का यूज करेंगे। हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, हमें मिल गया 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और बिल्कुल यहाँ से फिर अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले तो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो जब आप इन्फिनिटी की वैल्यू यहाँ रखोगे, दिस बिकम जीरो, दिस बिकम जीरो, दिस बिकम जीरो एंड दिस बिकम, बिकॉज हम जानते हैं 1 बाई इन्फिनिटी गिव्स अस जीरो। ओके, तो हमारे पास क्या वैल्यू मिल गई यहाँ से, बस एक्स कैंसिल, विल गेट 1। सो जब y इन माइनस इन्फिनिटी का अप्रोच कर रहा, सॉरी x जब माइनस इन्फिनिटी का अप्रोच कर रहा, ठीक है, तो y हमारा अप्रोच कर रहा है किसको, 1 को। सिमिलरली जब x हमारा माइनस 1 का अप्रोच करेगा, वैल्यू रख के देखो यहाँ पे माइनस 1, विल गेट y इक्वल्स टू 3। सिमिलरली जब y x हमारा 0 होगा, अब 0 रख के देखो तो आपकी वैल्यू y इक्वल्स टू 1 आएगी। अब रखो इस फंक्शन में वैल्यू, अब देखो क्या वैल्यू आ रही है y में रख के देखो। इस तरह से x 0 रख लिया, अब x इक्वल्स टू 1 रख के देखो,
तो आपकी y की वैल्यू जो देगी आपको 1/3 देगी। अब देख लो y इक्वल टू 1 रख के देखो, दिस 1 1 माइनस 1 कैंसिल, 1 1 1 3, दिस बिकम 1 1 1 gives us 3 plus plus 3 and we left with only 1, so we get 1/3. Okay, so here we are getting 1/3. now अब x जब इन्फिनिटी हो तो बिल्कुल सेम तरीके से हमारा फिर ऐसे केस में y अप्रोच करेगा 1, बिल्कुल सही, बिल्कुल सेम, बिल्कुल इस तरह से करेंगे। तो अब देखो ये कुछ हमें प्लेसेस मिल गए जहां पर y की वैल्यू x के माइनस इन्फिनिटी माइनस 1 0 1 और इस तरह से x इन्फिनिटी को हो तो फिर y की वैल्यू क्या होगी। चलिए अब इसकी ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसे बना सकते हैं हम। देखिए अब ये हमारा x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। ओके, और इस पे हम वैल्यू रखें तो हमें पता चलेगा कि ये इधर माइनस इन्फिनिटी है, ये -1, यहाँ 0, ये 1 और फिर है इन्फिनिटी। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि हमारी जो वैल्यूज आई है मैक्सिमम वैल्यू वो 3 पे आई है और वैल्यू हमारे 1 पे है। ठीक है, और 1/3 है। तो एक लाइन 3 हम यहाँ ले लें, 1 हम यहाँ ले लें। ठीक है, तो हम 3 पे अपनी एक लाइन खींच लेते हैं, 3 पे एक लाइन खींच लेते हैं हम इस तरह से, दिस इज 3। ओके, फिर हम 1 पे एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, इस तरह से, है ना, और ये हमारी एक वैल्यू है 1/3, इसे भी हम डिनोट कर लेते हैं 1/3। तो 1/3 को जब हम करेंगे तो बिल्कुल हम कुछ ऐसा अप्रोक्स लाइन खींच रहे हैं 1/3 के लिए। ठीक है, दिस इज 1/3। सो नाउ अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मैंने क्या बताया था अभी कि जब वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगी, जब वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगी तो y 1 को अप्रोच करेगा, मतलब यहाँ मतलब जब वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगी, जब वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगी तो ये y को अप्रोच करेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखते हुए हम ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जब ये माइनस को अप्रोच कर रहा, ये इधर माइनस माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा, तो ये ग्राफ कुछ 1 के पास जा रहा। ठीक है, जैसे ही ये ग्राफ x इक्वल्स टू -1 के पास आता है तो ये ग्राफ 3 को टच करता है। देखिए ये रहा माइनस, ठीक है, -1 पे ये ग्राफ आप देखो बिल्कुल हमें 3 देता है। उस तरह से एक ग्राफ फिर 3 से 1 की तरफ जाएगा, 0 के लिए, जिस वैल्यू के लिए। देखिए ये फिर जैसे ही ये 0 x इक्वल टू 0 होता है y 1 को टच करता है। आप देखो 0 के लिए y 1। ओके, फिर जब y -1/3 को टच करने की कोशिश करता है, ठीक है, जब ये 1 होने की कोशिश करता है, 1 हम कुछ मान लो यहाँ ले लें, ये 1/3 का लाइन है। ठीक है, तो जैसे ग्राफ 1 को टच होने की कोशिश करता है तो 1 पे ये वैल्यू हमें मिल जाएगी 1/3, ये कुछ ऐसा। उसके बाद ग्राफ जैसे ही हम एक्स को इन्फिनिटी तरफ बढ़ते हैं तो ये ग्राफ हमारा 1 पे अप्रोच करता है, जैसा आपने यहाँ देखा। ठीक है, आपको होप समझ में आ गया होगा कि देखिए ये माइनस इन्फिनिटी को जब होता है एक्स की वैल्यू, दिस इज एक्स की वैल्यू, तो हमारी ग्राफ y को इक्वल्स टू 1 को अप्रोच कर रही है। दिस इज द लाइन ऑफ y इक्वल्स टू 1 और ये हमें बिल्कुल यहाँ पे 1 को अप्रोच करते हुए दिख रहा, लेकिन टच नहीं कर रहा है इसे, बस इसके पास से पार हो जा रहा। इस तरह से जब x इक्वल्स टू 1 की बारी आती है, ग्राफ x इक्वल टू 1 पे मैक्सिमम वैल्यू 3 देता है। इस तरह जब ये ग्राफ 0 की तरह अप्रोच करता है, x इक्वल्स टू 0 की तरफ, तो y की वैल्यू हमें 1 मिलती है। यहाँ पे देखिए 0 के लिए 1 मिला। फिर जब ये ग्राफ x इक्वल्स टू 1 की तरह अप्रोच करती है तो ये हमें 1/3 देता है, दिस इज 1/3। उसके बाद जब ये x इक्वल्स टू इन्फिनिटी तरफ अप्रोच करती है, x इन्फिनिटी तरफ जाता है, ये ग्राफ 1 को टच करने की तरफ बढ़ती है, दिस इज व्हाट द गिवन है। ओके, तो आप इस ग्राफ से बिल्कुल समझ गए होंगे। अब इस ग्राफ की उछाल देखिए, मैक्सिमम उछाल या 3 पे जा रहा और मिनिमम उछाल इसकी 1/3 पे रह रहा है। तो बिल्कुल ये हमारे इस फंक्शंस की ग्राफ हो गई, जो हमें ये बता रहा है कि किस तरह से हमारी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हमें मिल रही है। यहाँ पे देखो आपको 3 मिल रही है, यहाँ पे -1 1/3 मिल रही है। तो ये वैल्यू हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो गई और ये मिनिमम हो गई।
और जब मैं स्लोप की बात कर रहा था, अब देखो इधर स्लोप, इधर आपको स्लोप टेन थीटा पॉजिटिव मिल रहा, ठीक है। इधर क्योंकि प्लस था, इधर माइनस था और इधर प्लस था साइन स्कीम में, ओके। तो प्लस का मतलब स्लोप जितने भी हैं ये हमारे एक्यूट एंगल वाले मिल रहे हैं। अभी यहाँ चले जाओ आप, देखो स्लोप आपको एक्यूट ऑब्ट्यूस एंगल वाले मिल रहे हैं, ऑब्ट्यूस एंगल वाले मिल, फिर यहाँ चले जाओ आप, देखो आपको स्लोप जो है एक्यूट एंगल वाले मिल रहे हैं। बिल्कुल सही है, प्लस माइनस प्लस। तो इस तरह से इस फंक्शन का जो रेंज हो गया वो है y बिलोंग्स टू मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू 1/3 से लेकर 3 तक, ठीक है। आई होप you understand this. This is a great discussion in which we will learn how to draw the graph of the functions using differentiation as well, and how can we find range of the function of the form quadratic by quadratic. Thank you for very much for your patience. Please do subscribe my channel to get such informative videos, to such basic calculative and basic conceptual videos as well. So thank you very much for your cooperation. Please do subscribe my channel and share with your friends as well. Thank you very much.